Reena Aggarwal, thank you so much for joining me on ETimes TV. It's lovely seeing you. Thank you for inviting me. I'm sure it's going to be a lot of fun having this candid conversation. Yes, I wanted to be candid, and it's a pleasure seeing you on virtual images. Okay, fine. It would have been better had we met and done this interview, but all the same, I must start off by telling you that you are doing exceedingly well in Bade Achhe Lagte Hain too. It started off on a lighter note, and now you're right in the center. Absolutely, every plot revolves around you. You make the plot, it fails after some time. Make another plot, it fails after some time. It's all about you now. Of course, Right. along with Nakul and Disha. Nakul Along and with Nakul Disha. and Disha. So are you asking about like what's gonna happen next, or just in general how my experience has been on the No, I'm show? asking you, how has it been? Because this has been your most prominent role. I think it's been quite a, you know, quite an eventful journey for me working on this show, since it's my first negative role, and it's been extremely exciting, and there has been a lot of introspection, individually, like, when you do a negative role, I think it's pretty natural to receive a lot of hatred, and जब लोग इतना ज्यादा हेट करते हैं किसी कैरेक्टर को, तो आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ शोज कि वो कैरेक्टर जल्दी खत्म भी हो जाता है, बट on the contrary, I feel super blessed and lucky that since day one I've been a part of the show, and even today, like, when the show is about to take another leap, I'm still a part of the show, and I'm really really thankful to the makers, and I mean, I did not expect कि इतना लंबा जाएगा, to be very honest. And as you said that हर plot कोई एक plan as a negative character, बहुत सारी planning और plotting होती है, which is again it's a very common thing in TV shows. But somewhere, I don't know, I feel that I've sort of ruled the show, because there is one more woman who's playing, parallelly she's playing the negative role. So हमारे शो में ज्यादातर लोग जो हैं वो नेगेटिव ही हैं, और there are very few characters who are playing positive roles. So उस मैदान में survive करना, as a negative character, I think that I have now I can say that I've mastered the art, and I'm really enjoying doing the character. Yeah, it's been a fun ride. Absolutely fun ride. Actors say that when they play a negative role, it gets to them after some time. What about you? That happened with me in the beginning. In the beginning, as I told you, that there were some sort of introspection in the beginning. Of course, it was my first negative character, which started with a positive note. पहले वेदिका पॉजिटिव थी, फिर धीरे धीरे उसको मैनिपुलेट किया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया, एंड देन शी sort of revealed her that selfish side, that psycho side, कि नहीं, okay, I have to have this man in my life, अब by hook or crook मुझे बस इसको पाना है. So एक तो it was very layered character. एक होता है कि नेगेटिव है, डे वन से नेगेटिव है, और आपको सारी चालें चलनी है, आपको तबाही मचा देनी है, आपको बुरे से बुरी चीजें जो आपको बोला गया करने के लिए एज अ कैरेक्टर वो शो में आपको करना है. बट आई फेल्ट इन माई this journey playing of Vedika's character, I felt the character has been so layered कि पहले she was a नाइस वुमन कि हाँ चलो ठीक है, जो भी सो एंड सो रीजन से उसने किसी और आदमी से शादी कर ली, भले अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए शादी की है, प्यार किसी और से था, एंड आई एम श्योर रियल लाइफ में ऐसा होता है. आई फील रियल लाइफ में ऐसा होता है दैट यूर इन लव विद समबडी, बट एक टेंडर एज होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, और you end up getting married to some other person. But in the show, उसी चीज को शो में दिखाया भी गया था कि वेदिका ने किसी और से शादी की, पैसे के लिए शादी की,
बट बाद में उसको कुछ लोगों ने, जिनके अपने पर्सनल एजेंडाज हैं, मोटिव्स हैं राम के सारी दौलत हासिल करने के लिए, और सो शी गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज कैरेक्टर्स एंड देन इट जस्ट गेट्स ऑन टू लाइक एक वो हो जाता है ना, एक सनक आ जाती है कि नहीं, अब जो मुझे करना है वो मुझे ठीक लग रहा है। इतनी क्लाउडेड हो जाती है आपकी जजमेंट टुवर्ड्स योर ओन लाइफ कि आपको कुछ समझ नहीं आता और आप एक जिद पे अड़ जाते हो कि नहीं, यही सही है मेरे लिए। और तो उस वक्त जब सडनली पॉजिटिव था कैरेक्टर, बहुत प्यार मिल रहा था ऑडियंसेस की साइड से, फिर धीरे धीरे नेगेटिव हुआ, तो आई वाज सॉर्ट ऑफ skeptical कि यार कहाँ तक जाएगा, और I started getting hatred all of a sudden, and then I was like, fuck, ये तो मैंने first time negative role कर रही हूँ and I did not know कि लोग जो negative role करते हैं उनको इतनी नफरत face करनी पड़ती है। But then I think I made a very good decision by sticking to the character. If I had paid too much attention to the trolling or to the hatred, I wouldn't have been able to do this character. I wouldn't have been able to come this far with the role, and I'm really happy about it. I think I've learned a lot from the character itself. I feel, um, and I've learned it the hard way. I'm pretty okay with not everybody not liking me. There will be some people who will love you for your work, people who understand that, okay, this is real life, and this person is just playing a character. And I'm okay with, like, out of 100, 5 people not liking me, because there are 95 people who love me for what I'm doing. So your character is obsessed with money in the show. I must ask you here that Yes. how important is money to you? Money important for Reena? In real life, yeah, Reena. Yeah, I think it's very important. Of course. I mean, जो लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब नहीं होता, पैसा कुछ नहीं होता, I would be lying to myself if I say that नहीं. मुझे ऐसा लगता है money is very important, not only for yourself. There are so many good things that we can do when we have money. Money gives you a lot of comfort. Money gives you a lot of power, and it definitely comes with a lot of responsibility. If you're sensible enough to understand, if your intentions are clear. Like, I'm the kind of person that uh, there was a phase in my life when I didn't have a lot of money. Even right now, I will not say that I'm super rich, but then there are a few things that I want to achieve in life, I want to do in life, and I, most importantly, when I'm doing well for myself, simultaneously I want to be able to contribute to the well-being of others, which I can do when I have enough money. बिना पैसे के मैं सिर्फ बोलती रहूंगी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, but today, when whatever little bit I have, on my hands, I am able to take care of a lot of things, a lot of situations. बहुत सारे, अब मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी, but yeah, I feel money is important. It is important because बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स इसलिए आती हैं because पैसा नहीं होता. रिलेशनशिप्स में क्लैशेस होते हैं पैसे की वजह से. आप डिप्रेशन में चले जाते हो क्योंकि आपके पास इनफ पैसे नहीं होते. सो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट you're having, like, every now and then you're buying diamonds or limousine, or you have like 4 big mansions. But yes, to some extent money is important to maintain your sanity. So, have और you? पैसा यार ऐसे ही नहीं आता, इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है पैसा इंसान को लाइफ में. उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. और वो जो प्रोसेस है ना पैसा कमाने का, आई थिंक हर इंसान का ये ड्रीम होना चाहिए कि पैसा इंपॉर्टेंट है और मुझे पैसा कमाना है. बिकॉज वो प्रोसेस में आप लाइफ में बहुत कुछ सीखते हो. बहुत चीजें हैं जो लाइफ में आप सीखते हो जब आपने ये डिसाइड कर लिया होता है कि यार दिस आई हैव टू रीच समवेयर इन माय लाइफ. मेरे कुछ सेट ऑफ गोल्स हैं लाइफ में. और ऐसा नहीं है कि पैसा चाहिए और आ गया. पैसा कमाने के लिए काम भी तो करना पड़ता है, मेहनत भी तो करनी पड़ती है. एंड इन दैट प्रोसेस there is so much that you learn as a human being. So have you refused पैसा तो important.
Have you refused a role ever because the money was not to your liking? Yes, I have like I can work for less money. I can work if the money is not, that if the amount is not that great. But the kind of experience I have, I know the kind of caliber I have, it has to do justice to, to some extent. I feel that हाँ अब वो स्टेज पे हूँ मैं लाइफ में जहाँ पे I can tell no to few projects because the money is not up to my caliber. You So said yes, some I people have. you said some people will like you and some people won't. Let's go straight. Yes. Does everybody like you in the show? In the show as in the team. Are you friends with Most of them, yes. everyone? Most of them, yes. I try to be a kind person most of the time, but when I feel that okay, I'm not getting the same vibe as I want to give to all the people on the set, it's okay. Then I'm okay with that also, and I just play my grey rock self around those people. हाँ ठीक है, काम से काम, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई दुश्मनी करनी है हमें किसी के साथ में, and that I think that's pretty natural. ये होता ही है. आप कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और जहां पांच बर्तन होते हैं वो खटकते ही आवाज करेंगे. बट आई थिंक आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ नॉट मेकिंग अ बिग इशू आउट ऑफ इट और नॉट टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली. इट्स ओके. आई थिंक मोस्टली तो हमारे सेट पे टच वुड सब लोग बहुत स्वीट है यार, बहुत अच्छे हैं. मेजोरिटी ऑफ द क्रू पीपल कास्ट सब लोग बहुत बहुत अमेजिंग है. और अगर कोई सेम वेवलेंथ का नहीं भी है तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है टू हैंडल दैट. So Disha and Nakul have become very, very popular. Let's talk about them. Yeah. What do you think about Yes. Nakul and as a person? He is extremely professional. First of all, I would say that मैंने उसकी बहुत सारी चीजें नोटिस की है सेट पे. वो सेट पे आता है, ही इज ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सीन्स. उसने अपनी स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी होती है, उसको पता होता है कि क्या क्या चीजें हैं जो करेक्ट नहीं है, एंड ही टॉक्स अबाउट दोज थिंग्स. वो चीजें मुझे उसकी बड़ी अच्छी लगती है एज एन एक्टर. एंड एंड द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक about him as a person, that meanwhile we're doing our scenes and we're being our you know playing our respective roles, he has this tendency of cracking jokes in between. He'll make you laugh, and at the same time he'll make sure कि set का माहौल जो है वो अच्छा है. Apart from being very very professional, he also has this quality of keeping everybody in a very healthy mental zone. Like he doesn't have this air about himself कि I'm Nakul Mehta and I'm the lead of the show. For him, I have seen that he treats everybody equally and सबके साथ बहुत मस्ती करता रहता है. बहुत बहुत प्यार से काम होता है हम लोगों के साथ सेट पे. And same thing about Disha. Disha is also, I would say, that one of the most beautiful human beings. मेरी बहन ने एक बार उसे बिग बॉस में देखा था जब राहुल ने उसे प्रपोज किया था. तो माय सिस्टर हैड टोल्ड मी कि यार मुझे ये लड़की बहुत क्यूट लगती है. तब हमने उसे टीवी पे देखा था. एंड उसके कुछ महीने बाद ही सडनली व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर बड़े अच्छे लगते हैं एंड आई स्टार्टेड डूइंग द शो, माय सिस्टर आस्क्ड मी लाइक आई हैव ऑलवेज बीन, आई थिंक मेरी बहन ने शायद पहले वाले उसके शोज देखे होंगे या आई डोंट नो. तो she asked me like how is she as a person, and of course everybody else in the family also asked me like how's the atmosphere at work, और कैसे हैं नकुल दिशा, उनके साथ काम करना कैसा लगता है. And I was completely amazed to learn that she's a very very sweet, a very gentle person. और बहुत क्यूट है यार वो, बहुत बहुत प्यारी लड़की है. उसके साथ मजा आता है काम करने में. ऑफ कोर्स हम बहुत सारा वक्त साथ में नहीं बिता पाते हैं सेट पे बिकॉज लीड्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है. सीन्स का बैक टू बैक सारे सीन्स में वो लोग होते हैं. बट जितना भी टाइम हम लोग सेट पे होते हैं, जितने भी सीन्स हम साथ में करते हैं, इट्स जस्ट लवली. आई मीन
बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है उसके साथ काम करने में. So where do you go from here? I mean, the show is taking a leap, and we have heard that Disha and Nakul are not going to be a part of it anymore. What about you? That's what I've heard actually. I'm not even sure about this कि वो सच में show छोड़ रहे हैं. This is what even I've heard from other people actually. I don't know if they're actually leaving the show, but even if it's true, I'm sure दोनों ने बहुत सोच समझ के decision लिया होगा यार. And about me, I think I mean this, as per the story is taking shape, my character will also end. It's been a beautiful journey. I mean, it's been tremendously beautiful experience working in the show. और अगर मेरा character भी खत्म हो रहा है, then I am leaving the show with a very happy heart. My heart is literally smiling that I work. This is my first show with Balaji, and till date, my experience has been extremely beautiful. I think I would really love to work with the production house again. And I think I'll be taking a break of a month or two because I am that kind of person, that kind of actor that I need a breather in between. तो एक बार वेदिका 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 बहुत ज्यादा हो गया. तो as soon as the character ends or the show gets over for me, I think I will take a break of some time, and I'm really hoping कि इसके बाद जो भी दूसरा शो मैं करूँ, जो कैरेक्टर करूँ, वो और इंटरेस्टिंग हो, डिफरेंट हो, कुछ हो. I don't know why. I really don't know. I mean, but Reena, if your character does not end, are you going to continue? If my character does not end, it totally depends then how the character is shaping up in future. I think I am definitely going to take a break because that conversation has already been done with the production. I have few things that I have to take care in my personal life, and like I have to go and visit my family. My mom's just got operated for her gigantic stone, and of course she's growing old, and it's been a while that I've really not spent quality time with my family. तो थोड़ा सा बच्चे हैं, कुछ दूसरे commitments भी हैं life में. So I might take a break of maybe, I don't know, a month or two, and if they still want me to be a part of the show, then I will be a part of the show. I mean, why not? But yeah, it totally depends कि character में क्या changes आने वाले हैं और या फिर क्या development होगा आगे show में, character में. So that will have to speak with the creative team. हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है, like you're always a part of the show, but आपको बीच में एक break, I will not call it a break actually, pause होता है थोड़े time के लिए आपका character बीच में, जैसे leap, अभी जो ये वाला leap आया था, पीहू जब introduce हुई show में, उसके पहले भी कुछ 1-1.5 महीना जो है I was not shooting for the show. So for me it was a pause, and आगे अभी स्टोरी में आई डोंट नो, क्योंकि जितनी स्टोरी हमें बताई गई है दिसंबर तक की, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है. उसमें तो मोस्ट प्रोबब्ली द कैरेक्टर इज एंडिंग. बट बाद में वापस अगर ऐसा हुआ दैट दे वांट टू ब्रिंग वेदिका अगेन इन द शो, देन विल सी आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, क्या डेवलपमेंट होगी कैरेक्टर में. But you have no problem in aging. I mean, that's what we hear that Disha and Nakul, the problem ये है कि that I know. Acha, this is what, oh yeah, I completely forgot about this thing. I don't think I'll be very comfortable playing with an old aunt, like really oldie with those gray hair, and that is something I won't be comfortable doing it. उसके लिए बहुत टाइम है अभी, उसके पहले और दूसरे काम करने हैं और अच्छे रोल्स और कैरेक्टर्स करने हैं. So I might not be very keen on playing a 50-year-old. Like even right now we're playing very mature characters, like 30 plus, हम late 30s वाले characters ही play कर रहे हैं right now show में. But इतना ज़्यादा बुढ़ा will be a little too much, like बिल्कुल ही ऐसा so that I might not be interested. I don't know.
So, Reena, how is it with you when you read about yourself? Let me ask you that any story or any report in your life has upset you? As in my personal life, in Reena's life, Yeah. it upsets me. Um, I don't know. It's like yeah. I mean, of course, I am not Dalai Lama. There are things, there are situations, there are times. Sometimes when suddenly कुछ unexpected चीजें life में हो जाती हैं, and but I always think it over and then I sort of deal with it. I mean, itna, I think last time नहीं ऐसी कोई situations नहीं हुई है मेरे साथ पिछले कुछ महीनों में. ऐसा कुछ नहीं हुआ है that will make me very upset. I was, I mean, of course, when I lost my father, that was one thing that happened to me last, and it took me a lot of time to come out of that. उसके अलावा कुछ ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे Why कोई, I'm but why you I'm can, if you asking you ask me something in specific, then I'll be able to probably answer it better. why I'm asking you this question is specifically related to certain reports which surfaced some time back about your personal life. They said that all is not well in your marriage, and what's the real truth? I think, first of all, I don't know who are these people who are talking about my personal life. These are some faceless people, and that I don't really care about. And when it comes to my personal life, I think that is, I would like to keep personal. I don't want to talk about it. I'm okay. I mean, whatever, I'm pretty okay. I'm doing okay. Pretty much focused in my work life. And उतार चढ़ाव होते हैं यार, सबकी लाइफ में होते हैं. And I've sort of made myself very comfortable with the kind of ups and downs have been there in my life. बाकी ज्यादा मेरे पास right now इस बारे में बात करने के लिए कुछ है नहीं. It is personal life, and I would still like to keep it personal. Yeah, so you're not allowing I me mean, to ask. it's not. You're not Yeah, allowing I me mean, it's there is. to ask my next question, which was actually, are you single? Yes. Yes. Yeah, sort of. Okay. So where do you go further in your career from here? Now, how are you looking at yourself? I mean, are you thinking of movies? Are you thinking of web shows? Or will you stick to television? Honestly, this is the longest I have worked on a TV show. It's been more than a year. और मुझे पहले टीवी थोड़ा अनकंफर्टेबल करता था. मुझे ऐसा लगता था कि यार इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू वर्क फॉर दोस 12-13 घंटे का शिफ्ट्स एंड प्लेइंग द सेम कैरेक्टर. बट आई डोंट नो द काइंड ऑफ love, or I don't know if I should say hatred, I've received in the show. I have sort of become a little addict uh, I have become workaholic, and I think I don't mind doing a TV show again if I get a very good role. Yeah, one thing that I would like to share about myself is that I'm very picky when it comes to you know taking up projects. So this role also I took up because it was different. Negative मैंने पहले किया नहीं था कभी, और ये बहुत ही अच्छे अमेजिंग से लोगों के साथ में. It was a brilliant chance to work with people like Nakul and Disha and other people in the show. बालाजी एकता मैम का शो जो हम हमेशा सुना था कि यार, and it turned out to be really true. मुझे ऐसा लगता है कि the kind of comfort the production house has given to me as an actor, मेरा जो उन एक एक्टर और एक प्रोडक्शन के साथ जो काम करने वाला जो कंफर्ट है ना, वो मुझे इट्स अनबीटेबल. आई मीन, और मुझे अब ऐसा लगता है कि yes, I can work for a TV show again.
if the same treatment is given to me, and if the role is interesting, I don't mind doing television. But yes, my priority would be to look for web shows or films. Because उसमें क्या होता है ना यार, and when I say that कि why this will be my priority, because उसमें क्या होता है कि आप थोड़े टाइम के लिए एक कैरेक्टर करते हो and then you move on to another. टीवी में थोड़ा सा ये होता है कि आप longer period के लिए stuck हो जाते हो. So that's the only reason I feel. And the kind of actor I am, I want to do different kinds of roles and different kind of projects. So that's the only reason, sort of get into web shows and films, So at some point in their careers. So do you see a lot of web shows? अब तो नहीं वक्त मिलता है ज्यादा, because बहुत ही I don't know, I think when you're doing television तो आपका content consuming process जो है वो थोड़ा slow हो जाता है, because छुट्टी वाले दिन पहले आपकी नींद पूरी करने में चला जाता है आधा दिन, and then of course you have a lot of errands to run, and but still I try. I mean, अभी तो 2-3 महीने से मैं कुछ भी नहीं देख पाई हूँ. उसके पहले मैंने कुछ शोज या कुछ फिल्म्स लाइक, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट सीरीज शुरू कर दो तो बीच में छूट जाता है, बहुत मुश्किल होता है कंप्लीट करना, बिकॉज देन यू हैव टू यू नीड टू हैव टाइम टू फिनिश इट अप. बट बीच में कुछ ऐसा मुझे लगता है कि हाँ चलो कल लेट का फॉल टाइम है या छुट्टी वाला दिन है, सब कुछ, तो मैं 1-2 घंटे वाली कोई फिल्म लगा लेती हूँ, वो देख लेती हूँ. बट येस, आई लव वॉचिंग गुड सिनेमा, एंड फिलहाल नहीं देख पा रही हूँ, जिसका मुझे बहुत दुख हो रहा है. तो ऐसा चल रहा है फिलहाल. Will you be comfortable doing all types of web shows? Because many web shows now you have this thing about using foul language, doing intimate scenes. All kind of yeah. Okay, so I'll tell you something. When we talk about foul language, or when we talk about really, those macho roles, जो आजकल लड़कियां भी प्ले करने लग गई हैं, I would love to do them, but at the same time, अगर ऐसा है कि आपको धड़ल्ले से गालियां देनी है एंड आप एक राउडी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, बट वो टू मच फॉर द, आई डोंट नो, आई मीन टू मच फॉर द ब्रेन हो जाता है समटाइम्स. यू I'm sure you must have felt that you watching a show or a film or anything, you watching it on TV or in theater, और कुछ certain characters होते हैं, और कुछ certain stories ऐसी होती हैं, आपको लगता है कि इसकी इतनी जरूरत ही नहीं थी. The actor is doing his or her job brilliantly, but I don't know, as an audience you feel कि क्या बकवास है यार, ये थोड़ा too much ही हो गया, इसकी जरूरत नहीं थी इतना. मतलब I will not name it, but there is one series I watched. In that series there is one episode where they've showed a woman is being raped in front of her father-in-law और बेटे के सामने, ऐसे पूरी उसकी फैमिली के सामने. there is a group of people who's raping her. वो मुझे, I don't know, I felt it was absolutely unnecessary. I mean, it is your responsibility also when we talk about cinema. I think as makers, as creators, हमें थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए यार कि मतलब हम क्या बना रहे हैं. वो जरूरत है तो रखो, नहीं जरूरत है तो जरूरी नहीं है. सबको पता है रेप क्या होता है और किस तरह से होता है, तो आपको इतना स्क्रीन पे उसको ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है. लाइक द फैमिली के सामने उस औरत का रेप हुआ है, एंड वो अजीब सी आवाजें उसमें सीन में आ रही है, एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक इट वाज बुलशिट. I just felt कि that scene was absolutely nonsense and it could have been avoided. So when you ask me, would I choose those kind of roles, मतलब किसी भी तरह का character, for me it is, I mean, I don't mind playing different roles, but then it has to make some sense also. It cannot be absolutely nonsense कि हाँ काम करना है तो कुछ भी कर लो.
कभी कभी होता है, एक्टर्स के ऊपर आता है लाइक यू नो, अब करना तो पड़ेगा ही यार, अब प्रोजेक्ट मिल गया है, अब रोल मिल गया है, अब डायरेक्टर को ये चाहिए या प्रोड्यूसर को ये चाहिए, तो करना ही पड़ेगा। बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि किसी कोई तलवार आपके ऊपर नहीं रखता है जब आप प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। समटाइम्स प्रोजेक्ट्स शुरू आप किसी अलग नोट पे करते हो, एंड मीनवाइल इन द प्रोसेस यू आर टोल्ड टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर द कैमरा। हम नहीं कर पाते, समटाइम्स एन एक्टर कैन नॉट डू मच अबाउट इट बिकॉज यू डोंट हैव मच से। बट अगर आपको बेहतर होता है, अगर आपको सारी चीजें रोल के बारे में पहले से पता हो, यू नो प्रोजेक्ट के बारे में पहले से पता हो, आपके कैरेक्टर के बारे में, एंड देन इफ यू डिसाइड। सो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट माइंड प्लेइंग, आई मीन आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट विद माई रोल्स। बट हाँ, कुछ कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि आई डू थिंक बिफोर टेकिंग। आई एम वेरी पिकी अबाउट माई प्रोजेक्ट्स। सो I do see myself playing different roles, but यार आजकल you also know कि कुछ भी हो रहा है। कंटेंट मेकिंग की जब बात आती है तो sometimes you feel कि ये क्या है, सर दर्द हो जाता है देख के। It doesn't, like you know, the kind of storyline, the scenes, the characters, it doesn't make sense. That I want to refrain myself from that. And other than that, I would love to experiment with any sort of, you know, different stuff. So have you refused any web show or a movie because it didn't go down well with you on certain मुझे scenes मिले ही नहीं है कोई or ऑफिस। on certain roles? मुझ तक आया ही नहीं है अभी तक कोई वेब से रिलेटेड या फिल्म से रिलेटेड काम ऐसा। बट हाँ, आई थिंक एक दो बार, शायद थोड़ा, शायद एक दो बार आया है और मैंने रिफ्यूज किया है मैंने रिफ्यूज किया है मैंने, बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट वल्गैरिटी एंड बोल्ड, जिसको कास्टिंग वाले लोग जब आपको पिच करते हैं तो बोलते हैं इट विल बी अ वेरी बोल्ड रोल मैडम। एंड व्हेन आई आस्क देम लाइक यू नो how do you describe a bold role, so the only thing they have to say is that a lot of skin show, a lot of you know love making scenes or stuff like that. Bold मतलब bold की definition बहुत vast है यार, सिर्फ स्क्रीन पे नंगा हो जाना is not bold. So I am okay, very much okay playing bold roles. In my opinion, Vedika is also bold, but yes, I do think about everything when I take up any roles. I want to ask you one more question, and it's related to the show. Um, Hmm. in this character which you're doing, initially when you were positive, before you turned negative, you used to wear a lot of Yeah. bell bottoms and a lot of Western outfits. But now we see you only in sari. Yes. Yeah. So, which look I would ask you, have you enjoyed more? I have personally enjoyed just before the leap जो मेरा look था. It was sort of Indo-Western. They've given me those long Georgette kurtas, not kurtas, I mean very pretty outfits they gave me. And in fact throughout the show they जो स्टाइलिस्ट है हमारे शो में, उस वो काफी अच्छा, आई रियली लाइक हर वर्क, एंड एवरीबडी इज बीइंग गिवन बेस्ट ऑफ द कॉस्ट्यूम्स। लुक वाइज काफी अच्छा काम किया है शो में उसने सबके ऊपर। और मेरा पर्सनल फेवरेट जस्ट बिफोर द लीप जो मेरा लुक था, बिकॉज इट वॉज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। अगर आप मुझसे पूछो पर्सनल लाइफ में, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आई लुक माई बेस्ट इन साड़ीज। और मेरे सोशल मीडिया पे भी जब भी मैं कोई साड़ी के फोटोज डालती हूँ तो सॉर्ट ऑफ तहलका आ जाता है, बिकॉज एवरीबडी एल्स लव वॉचिंग मी इन साड़ी एंड आई ऑल्सो फील दैट आई लुक माई बेस्ट इन अ साड़ी। बट मुझे ऐसा फील होता है कि वो थोड़ा सा शो में 12-12, 13-13 घंटे साड़ी पहन के रखना, इट गेट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल। तो मेरा जो पहले वाला लुक था वो भी इक्वली ब्यूटीफुल था। इट वाज अगेन really beautiful costumes and नीचे एक टाइट फिटेड डेनिम के साथ में ऊपर वो इंडो वेस्टर्न लॉन्ग कुर्ती एंड
वो भी बहुत पसंद आया था सबको, तो मेरा पर्सनल फेवरेट वो था। बाकी तो सारे ही उन्होंने यार, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द शो, आई थिंक आई कांट कंप्लेन अबाउट इट। बहुत अच्छा काम किया है स्टाइलिस्ट ने। Reena, thank you so much for this interview. You have been extremely candid as you promised. You have told us, what will be the state of Vedika when the leap happens. Uh, which which look do you prefer more when it comes to the show? You have also been candid about your personal life that now you're single, and well, you also told us that now you're looking for web shows, and you sketched it out very clearly that what type of roles would you be Yes, comfortable in. yes. Thank you, Vicky. Yeah. I think I enjoyed this whole session as much as you did. And it was lovely, lovely chatting up with you after so long. I think last हमने बात की थी जब previous show पांचाल के बाद ही I think हमारी एक या Yeah. दो बार बात हुई थी. Thank you, Vedika, and stay in touch. I would call you Vedika Thank now. you. It has given you so much. Thank you, Reena. It has certainly given me a lot. Yes, and I'm very, very thankful, very fortunate for that. Bye. Thank you, Vicky. See you soon.